So today we have just seen the introduction here. Now what are the different applications जो डिटेल में है एप्लीकेशंस वो तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में भी। यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंटर्ड ओवर द लाइव्स इन द 1999। सो 2000 से जस्ट पहले इंटरनेट बेसिकली हम सब लोगों की लाइफ में एक बेसिक रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई थी तभी, और 2000 के बाद से ही आपका बहुत ज्यादा इंटरनेट जब लोग यूज करने लगे तो बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होने लगा। However, in fact, the first IoT application has entered our lives before. कब? 1991 में। यहाँ पर हम we are talking about a complete brief history about it. So a system was designed 1991 में. A system was designed to send images of a copy machine to the computer of academics at the University of Cambridge 3 times a minute, right? Due to the fact that it is online and in real time. This system is considered to be the first application of the Internet of Things in the world. And some of the other applications we are talking about here, the wearables, the connected cars and the smart cars, the smart cities, the smart industry, smart agriculture, smart retail, energy management, smart healthcare, smart poultry in the farming, and the smart industrial. So, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंटरनेट आपका 2000 से जब पिक्चर में आया तो बहुत सारा जब डेटा जनरेट हो गया तो फर्दर डेवलपर्स ने, जो कोडर्स थे, जो प्रोग्रामर्स थे, उनको ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़े जो बिग डेटा को हैंडल कर सकें, जो इतने सारे डेटा को एक जगह स्टोर कर सकें, देन उस डेटा को में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एनालाइज, बिग डेटा को एनालाइज कर सकें। तो वो हमारा 2005 तक हडूप के फॉर्म में जनरेट हुआ। ठीक है, सो वो जस्ट इंट्रोडक्शन। सो स्मार्ट सिटी IoT एप्लीकेशंस की बात करें तो IoT एप्लीकेशन फॉर द स्मार्ट सिटीज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट पार्किंग, द पब्लिक सेफ्टी सॉल्यूशंस, द स्मार्ट लाइटनिंग, द स्मार्ट वेस्ट कलेक्टिंग एंड द मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी एंड द ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, अभी आप रेड लाइट क्रॉस करने में चलान ऑटोमेटिकली कट जाता है, दैट इज अ स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट? सो मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, जो AQI आप बार बार देखते रहते हो, right, कि कितना भी एयर क्वालिटी है, that comes under monitoring the air quality, the public safety solutions, whatever the safety solutions we are talking about, the fire safety solutions or the different safety solutions, smart parking आपको मिल जाती है। अभी आपका जो फास्ट ट्रैक का कार्ड, वो स्मार्ट पार्किंग, डेफिनेटली स्मार्ट लाइटिंग एंड द स्मार्ट वेस्ट कलेक्टिंग, ये आप बहुत अच्छे से अभी आजकल स्मार्ट सिटी की फॉर्मेट में ये सारी IoT एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? When we are talking about the smart farming IoT applications, right? अभी किसी फार्मर को अपनी एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में जानना है तो वो उसकी उस पर्टिकुलर क्रॉप को पिक्चर सेंड करता है, डिफरेंट एग्रीकल्चर्स में स्मार्ट कंट्रोल किया जाता है, वहां से प्रॉपर उसको उस पर्टिकुलर क्रॉप में क्या कमी है या क्या है वो फार्मर उसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कर पाता है, तो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाता है। तो स्मार्ट IoT, स्मार्ट फार्मिंग इज देयर, राइट? तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये सब हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। स्मार्ट ग्रिड एंड द IoTs, this we will talk about smart home, smart home, thermostat, right, blinds, security cameras, TV speakers, locks, smart lock is there, lightning is there, appliances is there, right? So here is a smart home, right? यहाँ पर आप बहुत कुछ यूज करते हैं IoT in the retail, 5 methods: smart shelves, traceability, loss prevention, further promotions, and the customer flow. Smart supply chain application, we are talking about factory to warehouse to refrigerated truck to the distributed center to the refrigerated truck to the burger joint. तो यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वेरिएबल्स की बात करें, so you are basically using the smart watches, fitness band, these all are the smart whatever the products you are using for your health and the fitness sectors में आपका wearable IoT applications discuss कर रहे हैं। Now connected car IoT applications में here we are discussing about the
connected car for the IoT application and the transportation, security, traffic, and the route optimization, automated payment of the road tolls, right? Uses-based insurance, fuel optimization, automated car rental, car sharing, car and entertainment, all comes under the car IoT applications. So here we talk about, ये basically आप कुछ भी गूगल पे डालते हो IoT एप्लीकेशंस में, आप हेल्थ रिलेटेड डालते हो, एक डॉक्टर सर्च करते हो, उसके रिव्यूज भी सर्च करते हो, राइट? सो इंडस्ट्रियल इंटरनेट IoT एप्लीकेशन, tools, processing, analytics, connectivity, alerts, different applications में आपका वर्क करता है. So फर्दर IoT को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो कंज्यूमर पार्ट से और एक इंडस्ट्रियल पार्ट से. So defining IoT with a consumer part and an industrial business segment. The first distinction people started to make was between a consumer IoT and an Internet of Things for the industrial applications, or industrial IoTs as a way to distinguish between many types of IoT use cases and applications.